Okay, chaliye. So let me start today's session. Good evening, all. Welcome to Ganitagya Academy. Myself, Professor Hitesh, and today we are discussing the topic that is trigonometrical ratios. Okay. So today's topic is trigonometrical ratios. So before starting, let me tell you some few things. Yes. So let me study first some few things that in a right angle triangle, this is right angle triangle. Okay. So in right angle triangle, we already know using Pythagoras theorem, opposite to 90 degree, we are having hypotenuse. Okay. If we are talking about this angle, so opposite to this angle will be perpendicular. Okay. And remaining is base. So according to Pythagoras theorem, that we know h square equal to p square plus b square, and we know that sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base. ठीक है, and opposite to this cosec theta is 1 upon sin theta, and that is equal to h upon p. Then sec theta, so sec theta is 1 upon cos theta, and that is equal to h upon b. And third one is cot theta, and cot theta is 1 upon tan theta, and that is equal to b upon p. ठीक है, राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए इतना लिख लीजिए, देन लेट मी नो. Okay, so let me clear this. Now let me start our questions based on this. Number 1. So question is, find the value of x if figure is given. ठीक है, चलिए. Yes, so let me give you some few things that you have to make table. That sine 0 is equal to 0, sine 30, sine 60, sine 90, sine 150, sine 180. What is the value of these things? Number 1. ठीक है, चलिए let me find out first these things. So sine 0 is 0. तो हमेशा याद रखने के लिए let me give you one curve, so that will give you the exact information. ठीक है, let me first discuss this and then we will go to question. Some few things more. So we are having, this is called the sine curve, what I am plotting. This is sine curve. ठीक है, so this is, see one more thing, that one is in radian and one is in degree. ठीक है, one is in degree. ठीक है भाई, आपको बोलते रहे, आता रही तो बताते रहिएगा. तो रेडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग पाई and 2 pi, most important. So pi in degree is 180 degree and 2 pi is 360 degree. So this is waveform of sine where this is symmetrical. ठीक है, this value is so 1 and this value is -1, and this is 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree, and this is 360 degree, and in between other angles will come. So first of all let me discuss this 4. So sine 0 is 0, sine 180 again 0. ठीक है, then sine 270 is -1, then sine 360 is again 0. Understood? Now in between there will be 30 and 60, then 120 and 150. So 30 will come here, 150 will come here, so both will be same. This is 60 and this is 120. Let me tell you, let me write it. ठीक है, I am telling this is 30 and this is 150. ठीक है, so sine 30 is 1/2. If sine 30 is 1/2, sine 50 is also 1/2.
Sine 60. This is sine 60, and that is root 3 by 2. That you have to remember. That is root 3 by 2. ठीक है, that is 0.866. So sine 120 is also same. That is root 3 upon 2. Understood? Similarly, the same thing in the negative direction. What does it mean? 120 के 180 के बाद में 210 आएगा, and then 240 आएगा. So sine 210, sine 240, sine 270 you know, then sine 300, and then sine 330, and then sine 360 you know 0. So sine 210 and sine 300, sine 330, sine 210 and sine 330 दोनों सेम रहेंगे. कितना रहेंगे? That will be -1/2. वायु बताना if anything wrong is there. Then 240 and 300 both will be minus root 3 by 2, minus root 3 by 2. This curve will you should always remember. इतना कर लीजिए. Everything is very much clear to you. Let me repeat it. First write it down, then let me repeat it. Okay, so let me clear this. चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं. We will repeat it with the bigger diagram. तो इसको अच्छे से बना लीजिए. ये डायग्राम बना लेंगे, अच्छे समझ लेंगे. The all thing will be clear for long time. इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये आपके साथ रहेगा. बिकॉज इफ यू विल सी, अगर आप साइंस की बात करें, सो आप मल्टीमीटर समझते हैं. मल्टीमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है, मीन्स करंट मेजर करता है. बट मल्टीमीटर अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, एंड हमारे घर में जो वेवफॉर्म आ रही है ना, तो स्विच हम जो प्लग इन करते हैं हमारे टीवी प्ले करने के लिए, कुछ के लिए भी, तो जब अब वहां पर अगर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे ना, सॉकेट में 3 सॉकेट होते हैं ना, लाइक दिस होता है ना. तो ये होता है अर्थिंग के लिए. दिस इज फॉर अर्थिंग. ठीक है. सेकेंड वन इज, एक होता है प्लस और एक होता है न्यूट्रल. ठीक है. तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं अगर वो लगाऊंगा ना मल्टीमीटर, 2 प्रोब के साथ में, 1 मल्टीमीटर इफ आई पुट, सो दिस मल्टीमीटर विल गिव मी दिस वेवफॉर्म. अगर हम ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो मल्टीमीटर लगाएंगे तो केवल वैल्यू देगा. बट अगर वेवफॉर्म देखेंगे, सीआरटी लगा लेंगे, सीआरओ लगा लेंगे, सो यू विल गेट दिस वेवफॉर्म. दैट इज कॉल्ड एसी वेवफॉर्म. दिस इज कॉल्ड एसी वेवफॉर्म. चलिए, है ना, वो फिजिक्स में आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में. चलिए, सो द थिंग इज, दिस इज कॉल्ड साइन वेवफॉर्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइन वेवफॉर्म, है ना. दिस इज, यू हैव रिटन 180 डिग्री, 180 इज इक्विवेलेंट टू पाई, एंड 360 इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई. एंड पाई को हाफ कर देंगे तो कितना होगा? पाई बाई 2. इसको हाफ कर देंगे तो 3 पाई बाई 2. ठीक है. दिस इज 0. अब 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में 2 चीजें हैं, है ना. चलिए इसको डिग्री में ही लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. बाद में यू कैन कन्वर्ट इट. सो इट इज 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360. ठीक है. यहाँ पर वायु हमने 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दी. दिस इज 1/2 लाइन, and then root 3/2 line. Understood? So the value is यहां से लेकर यहां तक, that is root 3/2, and यहां से लेकर यहां तक the value is 1/2. ठीक है. So this is 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 हुआ, यहां पर होगा 120 एंड यहां पर होगा 150. अंडरस्टूड? सो आप डायरेक्ट लिख लो, साइन 0 इज इक्वल टू 0. साइन 30 कितना बता दीजिए? साइन 30, चलिए साथ में इसको मैं पाई की टर्म में भी लिखता हूं. सो 180/6 मतलब पाई अपॉन 6, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज गिवन बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2. और कहां पर है? साइन 150 पे.
So sin 150, that is nothing but sin 150 मतलब we will say 5 pi by 6, क्योंकि जब पाई को 180 लिख देंगे तो 150 आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ पॉजिटिव हाफ के लिए नेक्स्ट साइन 60, साइन 60 को वायु हम लिखेंगे साइन पाई बाई 3, ठीक है, और वो होगा √3/2 इज इक्वल टू साइन 120 इज इक्वल टू साइन, क्या लिखेंगे उसको, 2π/3। अंडरस्टूड। सो ये वैल्यूज हमेशा याद रखिए, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, नेगेटिव के लिए बनाते हैं। नेगेटिव के लिए 2 लाइन बना दीजिए, -1/2 की एंड देन -3/2 की, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट जब हुआ तब एक लाइन ये हो गया, जब ये इंटरसेक्ट हुआ तब हो गया, जब ये इंटरसेक्ट हुआ तब समथिंग, एंड देन ये इंटरसेक्ट, ठीक है। सो लेट मी क्लियर इट एंड लेट मी राइट इट। चलिए, सो ये 150 180 + 30, सो ये 210, देन इट इज +30 तो 240, this is 270, this is 300 and this is 330 and ये तो 360 था ही सही। अंडरस्टूड। चलिए, ओके, सो साइन 210 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये लाइन है 1/2 की और यहां से लेकर यहां तक √3/2 की, ठीक है। साइन 210 इज -1/2 इज इक्वल टू साइन कौन सा 330, ठीक है। चलिए, उसको पाई के टर्म में यू कैन राइट, देन साइन 240 इज इक्वल टू साइन 300 इज इक्वल टू -√3/2। अंडरस्टूड। साइन 0, साइन 180, साइन 360 0 है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं साइन 0, साइन पाई, साइन 2π, आगे जाएंगे तो साइन 3π, साइन 4π इज इक्वल टू 0। तो सोहा हमेशा याद रखिए, मे बी दिस इज नॉट फॉर यूर दिस वन, बट जब भी n कोई भी इंटीजर रहेगा so sin nπ will always be 0, ठीक है। 1 step above, but remember it, sin nπ will be always 0। okay, so let me clear this now। Similarly, next is cosine या next is cos, ठीक है। so next is cos, so cos is the waveform, please plot it। the cos is the similar one, but it is like this, ठीक है। this is 0, this is 90, this is 180, this is 270 and this is 360। understood। now make a 2 line, that is 1/2 line, then 3/2 line ना, थोड़ा ऊपर से कर लीजिए। 1 is 1/2 लाइन, कि कब फंक्शन की वैल्यू 1/2 रहेगी एंड देन कब इसकी वैल्यू 3/2 रहेगी, ठीक है। सो लेट अस से दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज √3/2 एंड दिस वैल्यू इज 1, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ, पहले हम पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं, ठीक है। सो यस, करिए। चलिए, सो यस, हमेशा डिवाइड करिए इसको, cos 0, cos 30, ठीक है, cos 60, 30 के डिफरेंस पे,
cos 90, ठीक है। अभी cos 120, 150, 180, 210, 240, 270 को एक्सक्लूड कर दिया, देन 230, सॉरी 300, देन 330, देन cos 360। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले बताइए cos 0 कितना, cos 0 is 1, then cos this is 30, so cos 30 will be root 3 by 2, cos 60 will be 1 by 2, cos this is 300, this is 330, so cos 300 is no, cos 90, cos 90 will be 0, cos 300 will be 1 by 2, cos 330 is root 3 by 2, and cos 360 is again 1. Understood? So both positive cycle you have written down. Now negative values, ठीक है, इतना लिखिए तब तक. This is half and this will be 3 by 2 approximate, ठीक है. So just join it, 1 2 then 3 4. Understood? Join it properly ना in your notebook. चलिए, so this is 120, this is 150, this is 180, this is 210 and this is 240, ठीक है. so cos 120 कितना हो गया, 0 30 60 90, हाँ we are on 120, 150, 180, then cos 210, 240 and 270, ठीक है. so cos 120 is minus 1 by 2, क्योंकि ये है minus 1 by 2, ये है minus root 3 by 2. so cos 120 is minus 1 by 2, cos 150 is minus root 3 by 2, cos 180 is minus 1, ठीक है. cos 210 is root 3 by 2 minus root 3 by 2, cos 240 is minus 1 by 2 and cos 270 is 0, ठीक है. चलिए लिख लीजिए इतना. yes, so we missed one thing, that is 45 degree. so always remember sin, देखो 30 and 60 के बीच में आएगा, तो 30 and 60 के बीच में आएगा, so that is 1 by 2 and 1 by 2 के बीच में, तो that is 1 by root 2. so sin 45 is, चलिए write it down in the next slide. I will explain sin 45, then sin 135, then sin 225 and like that. Okay, so let me clear this. Now we missed one thing, so write it down. sin 45 is 1 upon root 2, ठीक है. so in waveform you can see this is 90 degree, in between it is 45 and 90 plus 45 is 135, ठीक है. this is 180 and 180 plus 45 225, then 270 and then 45, so it is 315. Understood? so now we are having sin 45, sin 135, sin 225, then sin 315, ठीक है. so sin 135 is also 1 by root 2, है ना, क्योंकि both will be same, 1 by root 2, and then 125 225 and 315 both are 1 by root 2 minus 1 by root 2, ठीक है, minus 1 by root 2. very nice. Similarly in the waveform of cosine, that is cos waveform, है ना, so cosine ही बोलते हैं.
So this is 45 because it is 90 and this is 315. तो क्या लिखेंगे, this is 45 and this is which one, 315. सो दोनों का वैल्यू कितना है 1/√2, दोनों सेम आएगा. सो cos, let me write here, so cos 45 is 1/√2. ठीक है, and cos 315 is 1/√2. Understood? Now this is 90, so which to remain 225, तो वो भी नेगेटिव एंड 225 भी नेगेटिव. So it will be cos 225 and cos 135. These both are -1/√2 and -1/√2. ठीक है, so this is completed. तो we will make a table जिसमें हम 30 और we will start from starting. चलिए write it down. Okay, so let me clear this. Now let me make a table. ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, मुझे बताना कुछ मिस ना कर दूं, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, है ना. 90 के बाद में देन 120, आफ्टर 120 कितना रहेगा 135. ठीक है, एंड आफ्टर 135 इट इज 150 एंड 180. ऐसा हमको उसमें भी जाना है. चलिए, सो लेट वी मेक इट, थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा. लेट मी, सो वी स्टार्टेड विद 0, देन 30, देन 45, then 60, then 90, 120, 135, 150, 180. चलिए ठीक है, 180 तक ही करिए अभी फर्स्ट इटरेशन में, एंड देन यू कैन गो टू 210, है ना, वो हम लिख चुके हैं. तो लेट वी स्टिक आवर सेल्फ अप टू 180 ओनली. उसके बाद में आप कर सकते हैं. चलिए, सो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए साइन. तो साइन 0 कितना है 0, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120 कितना है पायु 1/2, साइन 120 कितना है 90 + 30 √3/2 ना. साइन 135 1/√2, साइन 150 इज 1/2 एंड साइन 80 is 0. एक बार कंफर्म कर लीजिए 120 और 150 हमारे उससे ही. चलिए, वेरी सिंपलेस्ट ट्रिक, क्या करिए 0 को डिवाइड बाय 2 तो सब जगह रख दीजिए, डिवाइड बाय 2 हर जगह लिख दीजिए. देन साइन 90 पे होता है 1, सो 1 को लिख दिया √4, दैट इज 2/2. ठीक है, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में एक 1 कम करते जाइए. सो 4 - 1 √3, देन √2, देन √1, देन 0, देन इधर भी √3, √2, √1 एंड 0. दिस इज फॉर जस्ट अच्छे से याद रखने के लिए, अदरवाइज यू मे रिमेंबर दिस ऑल्सो, नॉट अ बिग डील. ठीक है, चलिए लिख लो इतना. सिमिलरली यहां पर आप उसका करस्पॉन्डिंग रेडियंस भी लिख लो, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, it is 3π/4, then it is 5π/6 and it is π. ठीक,
चलिए, तो साइन का कंप्लीट हुआ। ओके, वैसे ही लेट मी राइट कॉस का। हम लिख चुके हैं cos 0 इज 1, ठीक है। cos 30 इज √3/2, ठीक है। cos π/4 इज 1/√2, ठीक है। देन cos 60 डिग्री कितना 1/2, ठीक है। cos 90 0, cos 120 -1/2, cos 135 अगेन माइनस में आएगा ना 1/√2, ठीक है। देन cos 5 मतलब cos 150, तो cos 150 कितना -√3/2, जस्ट कंफर्म। एंड cos π माइनस, अंडरस्टूड। चलिए ये 10 0 के लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 10। सो 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0 0/1 0, देन साइन अपॉन कॉस, सो इट इज 1/√3, साइन अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस कितना √3, π/2 पे 10 1/0 इज इनफाइनाइट, 10 120 कितना होगा -√3, 10 3π/4 -1, ठीक है। देन -1/√3 एंड देन 0, अंडरस्टूड। 10 भी आ गया। वैसे ही इसको रिवर्स करके यू कैन राइट कॉसेक, यू कैन राइट कॉट, यू कैन राइट कॉसेक एंड यू कैन राइट कॉट। चलिए इतना लिख लीजिए, हम ही करते हैं। पहले टेबल बना लीजिए, मैं चाहे तो एक बार और इसको रिपीट करता हूँ। इसको बना लो, लेट मी रिपीट इट एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस नाउ इमीडिएटली। राइट डाउन, यहां पर लिखिए साइन, यहां पर लिखिए कॉस, ये थीटा है ना, चलिए मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, कॉस देन 10, देन साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड 10 का अपोजिट कॉट, ठीक है। यहां पर लिखिए एंगल्स कितना है 0, देन 30, देन 45, then 60, then 90, then 120, then 135, 150 and then 180। चलिए अब सब फटाफट फिल कर दीजिए, आप टाइम लीजिए करिए, देन आई विल फिल इट। चलिए सो लेट मी राइट इट, आप लोगों ने ट्राई किया, ठीक। सो साइन 0 0, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 कितना लिखा था √3/2, साइन 90 1, साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 80 0। नाउ cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब नेगेटिव आ जाएगा है ना, cos 120 -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड देन -1, ठीक है। 10 साइन अपॉन कॉस, तो 0/0 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, so 1/√3, then it is 1, then it is √3, then it is 1/0 is infinite, then minus √3, then -1, then -1/√3, then 0, ठीक है। चलिए अब कॉसेक मीन्स साइन का इनवर्स 1/sin, so 1/0 infinite, it is 2, it is √2, sorry I am just writing opposite of sine, then 2/√3, then 1, then 2/√3,
है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये sin cos 10 is more, sin and cos is more than sufficient, then 2, then 1/0 is infinite. ठीक है, any mistake let me know. Sec is 1/cos, 1/1 1, it is 2/√3, it is √2, then 2, then infinite, then -2 minus √2, then -2/√3, and then -1. Now 10 ka inverse, 1/0 infinite, it is √3, it is 1, 1/√3, then 1/infinite is 0, then √3. So √3 का inverse -1/√3. ठीक है, -1, then -√3, 1/0 is infinite. So this is the table. Take the screenshot, send it our group also. इसको हमेशा ध्यान रखिए. चलिए सबने लिखा. Now let we move to our question and then we can solve our question very fast. चलिए, find the value of x. See, very easy question. This is 60 degree. So opposite to 90 degree is hypotenuse. So this is hypotenuse. ठीक है. So sin 60 is perpendicular. So opposite to angle is perpendicular. 20 upon hypotenuse is h, or h is nothing but x. Sin 60 you know how much? √3/2 is equal to 20 upon x. So I can write x equal to 40 upon √3 by cross multiplication. I can write multiply both sides by √3. So this is the correct answer. चलिए write it down. Let me know when done. You can write 40 upon √3 or you can write 40 √3 upon 3 also. This is more better way to write. ठीक है, चलिए. Okay, so let me clear this. Yes, perfect. So next is चलिए third and fourth. So now remember, so this is only one thing is given in question number second, or I missed something. तो perpendicular दिया है. कितना है? 20. This is second, this is given na 20. Okay, this is already given 20. Very nice. So we can say this is angle 30 and opposite to 90 having hypotenuse. So in this case x will be base, है ना, बस ये आपको ध्यान रखना है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर. So this is perpendicular. So now you can say that which formula we will use? P upon B, because tan 30 is perpendicular upon base. So tan 30 we know that is 1/√3, perpendicular is 20, base is x. So we can say x is 20 under √3. ठीक है, this is second one. And third one is which formula? See, opposite to 45 degree, this is perpendicular, opposite to 90, this is hypotenuse. So P upon H, sin 45 is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 20 upon x. Sin 45 is 1/√2, that is 20 upon x, hence x will be 20√2. Please write the both the answers, then let me know. Okay, so let me clear this. Let me move to next question. So next question is we have to find the angle. Okay, so we have to find the angle. चलिए, so this is 90 degree and this is angle A. Opposite to 90 degree we are having hypotenuse. Opposite to angle, this is perpendicular and this will be base. Okay, so we can say base upon hypotenuse is cos theta. It means we are having cos A. ठीक है, so cos A is equal to base upon hypotenuse 10 upon hypotenuse 20, 1/2. Now you know cos 60 is A will be 60 degree, yeah, because cos 60 is 1/2.
ठीक है, राइट इट डाउन, completed na? Let me know when done. Let me clear this, let me move to next one. So yes, second is, yes, see, opposite to 90 degree, this is hypotenuse, opposite to this is perpendicular. So sine A is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is 10 upon root 2, hypotenuse is 10. ठीक है, so sin A is equal to 1 upon root 2. So क्या होता है 1 upon root 2? 45 degree. So we can say A is equal to 45 degree is equal to pi by 4 रेडियन. एक डिग्री में, एक रेडियन में, ये हमेशा आपके साथ में मिस्टेक रहेगी since long time, up to long time, but we will try to rectify it. अभी सही ध्यान दीजिए, एंगल और मतलब डिग्री एंड रेडियंस में. ओके, सो द नेक्स्ट इज, always remember opposite to angle A is perpendicular. This is opposite 90, this is hypotenuse, so remained is base. So now you are having P and B, so you know 10A is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is 10 upon root 3 upon 10, that is 1 upon root 3. So 10A, when it will be 1 by root 3, when A is 30 degree. So then 30 is 1 by root 3. So you can say A is equal to 30 degree. चलिए लिखिए, बताइए कुछ गलत तो नहीं किया? चलिए परफेक्ट. Sir, it is 60 degree. How it is? चलिए, so if it will be, if this is, चलिए let me clear this. हाँ, yes, if it is instead of 10 root 3, it will 10 by root 3, it will be 10 root 3. That time 10A will be 10 root 3 upon 10, that is root 3. So that time it will be 1060. 1060 equal to root 3. So that time we will say A is equal to 60 degree. ठीक है, write it down. चलिए, clear this much. Okay, so next question. So next is yes, find angle X. You have to find this angle X. ठीक है, this is given 30. चलिए, so what we will do, with the help of this triangle we will find this distance, and then with this we will find this one. So let us say this perpendicular is, let us say this name is V. ठीक है, so opposite to 60 degree, that is perpendicular, opposite to 90 degree, this is hypotenuse, this is base, है ना? तो let me write B only. You can write 1060 is equal to, in this triangle you can write 1060 equal to perpendicular upon base. So base is 30 upon 1060. So how much is 1060? 1060 we have written root 3. So B is 30 upon root 3. Let me know if I am wrong. Next, in this triangle we can say this is base and this is hypotenuse. So you can say cos X is equal to base upon hypotenuse. So base is 30 upon root 3 upon 20. So it is 3 upon root 3 cos X, that is nothing but root 3 by 2. So cos 30 is root 3 by 2, hence we can say X is 30 degree. Am I correct? कुछ मिस्टेक तो नहीं किया?
Oh, sorry. For this one, it will be perpendicular, na? For this triangle, it will be Yes, perpendicular. sir. Yes. For this triangle, it is perpendicular. Sorry. For this triangle, it will be perpendicular. So sine x is equal to, now P will, for this triangle, for let us say A, B and C, for triangle ABC, now AC will be perpendicular. Okay, let us say AC only. So AC upon H. Yes, so it is sine x. So x will be 60 degree. Check. Completed. Very good. Okay. So for this you can write. Let me. बाकी सब लिख चुके हैं. Clear कर दूं. Yes, sir. Okay. So we have written 3 upon 2 root 3. So this is nothing but 3 को I can write root 3 into root 3 and 2 root 3, isn't it? So 3 root 3 cancel. So it will be root 3 by 2. Clear ना? Yes, sir. Yes, very nice. चलिए next question. चलिए. So let me clear this. Let me go to next question. So question number 4. चलिए. So the find AD, we have to find A to D, distance A to D. ठीक है. चलिए. So this is given 10 meter. ED is given 10 meter, already given. ठीक है. So now what we will do, in triangle ABE, we can say 1045 is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is AE divided by base. Base is how much? 50 meter. That is BE. So 1045 is 1. AE upon 50. AE na, sorry, AE. AE upon 50. So AE is equal to 50. Now AD equal to, you can say AD equal to AE plus ED. So AD equal to AE कितना 50 plus ED कितना 10. So it will be 60 meter. That is AD. ठीक है. चलिए कर लीजिए. चलिए. So let me clear this. Now next one. Okay. So next is, again in this also we have to find AD. चलिए. Whenever double sign is given, I told you, so we can say AC equal to BC. That we can understand from the diagram. Understood? So it is given that, वैसे उसका जरूरत है कि नहीं, that we don't know, है ना, that is not required. चलिए, और we will check. So हाँ, if we will take outer triangle A B D, so triangle A B D, in triangle A B D, sine B, yes, sine B is equal to, sine B is equal to, let me calculate first. Sine B is equal to AD upon 100. Understood? AD upon 100. This is very much clear. Now, if I could be able to find B, angle B, then my problem will be solved. Understood? So, but not this is not required here, but you must know. So AD is equal to, can you say AD is equal to 100 into sine B. Directly I can say beta B is 30 degree. How can I say? ठीक है, 100 sin B, AD is equal to 100 sin B. How I can say? See,
in this triangle ACD, triangle ACD, एंगल C मतलब एंगल ACD प्लस एंगल CDA plus let us say this angle is x plus x is equal to 180. So x will be 180 minus 60 minus 90. कितना हुआ 30 degree. X is 30 degree. So and this will be how much? That will be 180 minus 60, that is 1. ठीक है, write it down. चलिए, so x equal to 30. ठीक है, now and this angle is 120. ठीक है, so you can say that angle, let me write it here. Now it will be useful. AC equal to BC, because opposite to BC this angle is, let us say, y. So opposite to AC, opposite this angle will also be y. Understood? This angle will also be y. Clear? So y plus 120 equal to 180. So 2y is equal to 60 and y is equal to 30. Means this is angle B. So directly write AD equal to 100 into sin B. Sin B is sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So AD is 50 meter. Answer. ठीक है, AD is 50 meter. चलिए लिख लीजिए, बताइए हो जाए तो. Okay, so let me move ahead. चलिए next question. So the next is find the length of AD. This we have to find out. ठीक है, given angle ABC, total this outer is 60 degree and DBC is 40 degree. Okay, very nice. And BC is equal to 40 meter. चलिए, so let me solve it. सबसे पहले what you will do, take outer triangle ABC. So perpendicular upon base, we will take perpendicular. AC is perpendicular for this outer triangle. So AC upon BC is equal to 10 60. And what is the value of 1060? 1060 is root 3. So root 3 equal to AC upon BC कितना है 40. So write AC is equal to 40 under root 3. Understood? Now take triangle DBC. So DBC में क्या होगा? This is 45 degree. So 1045 is equal to DC upon BC. So DC कितना है? DC upon BC 1045 is 1. So DC equal to BC. So DC equal to 40 meter. Now you can say that AC minus DC equal to AD. So what is AC? 40 root 3 minus DC is how much? 40 equal to AD. So AD is 40 into root 3 minus 1. And root 3 कितना होता है? Root 3 is 1.732. So 40 into 1.732 minus 1 equal to AD. So 40 into 0.732 is equal to AD. So now find out AD. That will come 29 point approximately 3. ये सेंटीमीटर में है. Yes, I have written meter ना. नहीं, this is in centimeter. Sorry, this is in centimeter. So answer is also in centimeter. चलिए write it down. Okay, so let me clear this. Yes, and let me move to next one. चलिए, so the next is
question is find the lengths of diagonal AC and BD. Lengths of AC and BD we have to find. Given AB equal to 60 centimeter and angle BAD is 60 degree. Angle BAD is 60 degree. ठीक है, चलिए और क्या बोल के रखा देखिए, all sides are equal. All sides are equal. So AD is equal to AB is equal to BC equal to DC है ना, all sides are equal. चलिए नंबर वन गिवन है ना, नंबर वन. नंबर टू, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री. कौन सा एंगल BAD. सो एंगल BAD इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, चलिए. सो कैन वी से इट इज नथिंग बट रोम्बस, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, सो कैन वी से इट इज रोम्बस. अंडरस्टूड, दैट इज रोम्बस. एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, diagonals of a rhombus bisect at angle of vertex. Understood? So diagonal bisects. Number two, diagonal bisects. ठीक है, so what does it mean? If this is point is, let us say O, so we must say AO equal to OC. OB means BO is equal to BO is equal to OD है ना. these are bisect. चलिए, then diagonal bisects at the same time. एंगल कितना रहता है इसके बीच में, that will be 90. so this angle will be 90. rhombus की property. Understood? so you can write angle AOB is equal to 90, angle BOC 90, angle COD 90, angle DOA 90. ठीक है, राइट इट डाउन. ओके, सो सी हाँ यस, एट द सेम टाइम ये जो डायगोनल्स हैं ये इस वर्टेक्स एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं. व्हाट डज इट मीन? you know this is 60 degree, so this will be 30 degree है ना. ये जो एंगल है एंगल A, that is एंगल BAD कितना था 60, so this diagonal will bisect it also, so that will be 30 degree. Understood? so that will be 30 degree. so now you can find out AB. AB is how much? 60 degree. so can you find OA? this is hypotenuse and this will be base. so you can say that cos 30 will be perpendicular है ना, सही है ना, am I correct? sin 30 is equal to हाँ, if you are finding first OB, चलिए, so it is OA upon AB and at the same time sin 30 will be OB upon 60, isn't it? so आपका OA and OB दोनों आ गया. Understood ना? so OA is AB, that is 60, not degree, 60. I have written 60 degree, sorry 60. so 60 into cos 30. cos 30 कितना है? √3/2. so that is 30 √3, that is OA. so OA को डबल कर दीजिए, you will get AC. Understood? AC is 2 into OA, that is 60 √3, that is AC. Understood? now sin 30 1/2 is equal to OB upon 60, so OB is equal to 30.
So if OB is 30, then BD equal to 2 into OB. So 2 into OB means again 60. That is BD. BD is 60. So diagonals आ गए दोनों, है ना? So 60 root 3, how much it is? Let me know. 60 root 3. So 60 into 1.732. चलिए बताइए कितना होगा. चलिए, तो let me clear this. With this, we are ending our session today. Let me give you one question for the homework. So find the AB. This is our homework question. So write it down. Take the screenshot or write it down. So in the next lecture, we will start from this. Okay. Bye bye. Take care.